Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Madiha Qureshi, teacher of Guards Public School 1. How are you all? I hope you all are fine. I welcome you all to lecture number 5 of science for class 3. Students, today I am going to start a new unit and the name of the unit is the life cycle of plant, which is in your book on page number 42. So today we will cover some topics of this unit and the topics are plants, flowers, fruits and seeds, dispersal of seeds and germination. Now our first topic is plants. Plants are called producers because they make their own food. They differ greatly in size and shape. Plants produce various things such as flowers, fruits, seeds, vegetables, stems, leaves and roots. स्टूडेंट्स, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उनका साइज और शेप एक दूसरे से डिफरेंट होता है। प्लांट्स बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। Now, our second topic is flowers. Flowers are lovely, colorful, and often smell sweet. Flowers help plants to reproduce or make copies of themselves. फ्लावर्स लवली होते हैं, कलरफुल होते हैं और उनकी स्मेल स्वीट होती है। फ्लावर्स प्लांट्स की रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। Students, now I am going to tell you that how a flower grows into a fruit. Here is an example of a watermelon plant through which you can understand that how a flower grows into a fruit. Now you can see a picture on your screen. First, a tiny bud appears on the stem of a plant. Then you can see a bud grows into a flower. Later on, the flower grows into a fruit. So students, this is an example of a watermelon plant. Now we will discuss about fruits and seeds. Fruits grow from flowers. Fruits contain seeds. Not all fruits have the same number of seeds. Some like mango have only one large seed. Others like the papaya have many tiny seeds. Seeds are protected by the skin and flesh of the fruit. Fruits फ्लावर्स से ग्रो होते हैं। फ्रूट्स में सीड्स होते हैं और हर फ्रूट में सेम नंबर के सीड्स नहीं होते। लाइक मैंगो हैव ओनली वन लार्ज सीड, मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है। एंड द पपाया हैव मैनी टाइनी सीड्स, पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं। और फ्रूट का फ्लैश और स्किन सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंगो, peach and apricot are the examples of fruits having one seed. Papaya, watermelon and pomegranate are the examples of fruits having many seeds. Dispersal of seeds. When a fruit is broken open or dries up, its seeds may fall into the soil near the plant. Seeds are dispersed in many ways. Students, dispersal means होता है spread होना, means फैलना। तो जब एक फ्रूट ओपन होता है या ड्राई होकर उसके सीड्स ज़मीन पर गिरते हैं तो सीड्स डिफरेंट वेज में डिस्पर्स्ड हो सकते हैं। So, here are some ways
through which seeds can be dispersed. Number 1. Animals can disperse seeds by excreting. Animals के थ्रू seeds dispersed हो सकते हैं. Number 2. Many seeds are scattered by the wind. बहुत से सीड्स विंड के थ्रू मीन्स हवा के ज़रिए स्कैटर्ड हो सकते हैं, मीन्स डिस्पर्स्ड हो सकते हैं. नंबर 3. सीड्स कैन बी कैरीड बाय वाटर. सीड्स वाटर के थ्रू भी डिस्पर्स्ड हो सकते हैं. द फार्मर कलेक्ट सीड्स एंड प्लांट दैम इनटू द सॉइल. फार्मर सीड्स कलेक्ट करते हैं और फिर उसको सॉइल में प्लांट करते हैं, जिसकी वजह से सीड डिस्पर्स्ड होते हैं. सो these are the ways through which seeds can be dispersed. Students, now we are moving to the another topic, that is germination. Seeds usually have a hard covering. Inside each seed, there is a baby plant. When a seed is put into the soil and gets enough water, sunlight, and air, it can grow into a new plant. We say that the seed has germinated. सीड्स हार्ड कवर में होते हैं और हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है. जब सीड को सॉइल में डाला जाता है और उसको वाटर मिलता है, सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है, तो वो ग्रो होकर एक न्यू प्लांट बन जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. Students, here are the points of germination through which you will easily understand that how the seed germinates. First of all, a seed sow into the soil. सबसे पहले सीड को सॉइल में बोया जाता है. Number 2, the seed begins to grow. सीड ग्रो करना स्टार्ट करता है. Number 3, the root appears and begins to grow. फिर उसमें रूट अपेयर होती है और वो ग्रो करना स्टार्ट करता है. नंबर 4, द शूट पुशेज अप एंड बिगिंस टू ग्रो. फिर उसमें शूट आते हैं और वो ग्रो करना स्टार्ट करता है. नंबर 5, टाइनी रूट्स टेक इन वाटर. रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं. नंबर 6, द शूट ग्रोज ग्रीन लीव्स. और शूट ग्रीन लीव्स ग्रो करता है. Then we can say that a seed has germinated. So students, it's review time. Today we have covered this topic in today's lecture. Plants, flowers, fruits and seeds, dispersal of seeds, and germination. Now the remaining topic of this unit we will cover in the next lecture. Dear students, after watching and listening the video carefully, you have to do home assignment in your science copy. Question number 1 is define plants. Question number 2, define flowers. Question number 3, write the points of germination. Question number 4, write the names of fruits having one seed and many seeds.